Hello, 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 hello. Okay. Quickly drop a yes if you can hear the audio clearly. अगर आपको आवाज अच्छे से आ रही है तो एक बार yes लिख दीजिए चैट में. अगर आपको टाइप करना हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा because the chat is only on for subscribers. If you can subscribe and also press the bell icon so that you can get notifications of any videos that we post. Thank you so much for joining in, and we'll begin sharp at 8:30. We are very particular about time, so let's wait for 7 minutes. Until then, please tell me where are you from? आपने कहाँ से log in किया है? What brings you here? Hello Ritu. Chicago. Wow. Faridabad, New Delhi. Delhi is
How is the air quality there in Delhi? Neha is from Pune, Pramila is from Mumbai, Kerala, Vishakhapatnam, Delhi, Nagpur. I am from Nagpur, Chayaji. Tamil Nadu, Chennai, Bahrain, Hisar, Noida, Dahanu, New Delhi, Jaipur, Jabalpur, Gujarat, NCR, Hyderabad, West Bengal, Delhi, Karnataka. Hello, Yuval. Jaipur, Punjab, Coorg, okay, Coffee Estate, Gandhinagar, Khandwa, Punjab, Bangalore, Nasik. Where are you from? I'm from Nagpur, the center of India. Punjab, Pune, Nasik, Bhopal, Lucknow, Kashmir. Nice to have you here, Shilpa ji. I want to improve my health. Welcome on board. Aurangabad, Jamnagar, Chhattisgarh, Shrutir Ved, Arya from Nagpur. Hello. Punjab, Dahanu, Palghar, Ahmedabad, Delhi, Gurgaon. I want to be fit. That's great. Coimbatore, Mansi from Surat. Okay, how many of us here are doing yoga for the first time? आपने योगा पहले कभी किया ही नहीं है, पहली बार कुछ योगा रिलेटेड जीवन में करने वाले हैं. टाइप योगा इन द चैट बॉक्स. और अगर आप योगा पहले कर चुके हैं तो आप लिखिए already experienced, AE और E in the chat box if you have done yoga already. आप कभी भी किया हो अपने लाइफ में, और अगर पहली बार कर रहे हैं तो टाइप योगा इन द चैट बॉक्स. So we have E and yoga both. Oh, let's do a poll. How about we do a poll? Have you done yoga before? Yes. This is my first time. Let's see. Okay. कहाँ गया poll? हाँ, there you go. You can click on the poll. पोल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कर सकते हो. $78 votes for 73 people. 77% people are saying that they have done it earlier. 204 votes. Great. A lot of people have done it earlier. That's nice to know. Badhiya. I'm a yoga trainer myself. That's amazing. Welcome, Meenal. Mohammad Faisal is doing for the first time. Manisha ji is doing for the first time. Meena ji is from Meerut. Great. So for those of us who are joining, just take that poll. I'm also a certified yoga instructor. That's so nice to have you here, Anup. Yeah, those of us who are typing, you can vote on, have you done yoga before? Yes. And this is my first time. I want to be a yoga teacher. Okay, great. We'll begin sharp at 8:30. Okay, हम लोग 8:30 बजे exactly शुरू करेंगे. We are very, very particular about time, and we will also try to finish it before 9 o'clock. If not, maximum 9:05, not more than that. How are you, sir? Thank you, Pramod. I'm very good. Is it suitable for heart patient? This is suitable for everyone. I will tell who cannot do it. मैं बताऊंगा जो लोग नहीं कर सकते उनके बारे में I will tell you. Does yoga reduce weight? We will talk about that also, Anita. Where are you residing? I'm from Nagpur. Okay, how many of us, you look different today? Okay, so how many of us are joining the yoga sessions that we are conducting for the first time? Type 1.
And okay, let me do another poll. How about another poll? Let's do another poll. Okay, we will end this poll and we will ask another poll. Start a poll. Have you joined our sessions before? First time? And yes, I have done before. Let's ask this question. Okay, you again have the option. You can take that poll and click on it. आप कितने लोग हैं जो पहली बार कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है? Plantar fasciitis means heel pain. Yeah, I'm aware of that, राजेश जी. आपको वो दिक्कत हो रही है अगर, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा आपको हमारे सेशन से. Have done before. I joined last month. Now I joined the 3-month session also. Great. Yes, the one which you conducted. So we do every month free yoga session. Okay, every month there are 6 days we give it for free. That's open for everyone. Does yoga really help to lose weight, stubborn fat, especially in the belly region? I will answer your question. Or rather, I will ask you a question and you tell me the answer for that. Doing yoga because of your smile, sir. Thank you. Does yoga really help? I've already seen the question. Yes. Okay. So most of the people are joining for the first time. And there are some people who have done it before as well. That's nice. So it's 8:30 and welcome to this orientation session in which what we are going to talk about is first, what is the format? What is it that we are trying to do? 6 days challenge क्यों है? And all these questions. Plus towards the end, we are going to talk about what are the ways that will help you have a better sleep. Okay, because sleep is a very integral part of our health, and if you focus on sleep it will give you amazing benefits in anything that you're doing. Okay, तो आपको उससे बहुत ही फायदा होगा. So we'll begin the session with a question. Okay, now I have a question for you. What brings you here? आपने क्यों सोचा कि आपको योगा करना चाहिए? Type it in the chat box. Type it in the chat box. What brings you here in the session? मुझे belly fat कम करना है, weight lose करना है, healthy रहना है, motivation to stay fit, but not done regularly, weight loss, want to be fit. Yoga has become a trend. Yoga is trendy. That's why I want to do it. Weight loss. Okay, reduce the weight for good health, for my tummy. मेरा weight lose करना है, reduce fat, weight loss, relaxation. I want to stay fit. Back issues, strengthen my back, improve my health. Relief नहीं मिल रहा है, body pain बहुत ज़्यादा है. Hypertension में useful होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? FB प्रमोशन था इसलिए कर रहे हैं. Freedom and Spirit free है इसलिए कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी बात है ये तो. I want to reduce my sugar and all that. Okay. Now, whatever you have written, my question to you is this. What are the qualities or quality of a person who will get these results? एक क्वालिटी तो कम से कम आप बताइए जो आपको लगता है कि ये क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए टू गेट द रिजल्ट दैट आई एम वांटिंग. टाइप इट इन द चैट बॉक्स. Discipline, 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 consistency, patience, persistence, consistency, discipline, consistency, discipline, dedication, regularity, consistency, be active, consistent, be fit, consistent, regular, determination, consistency. So I am sure I'm able to make the point very, very clear. The foundation of any result, be it your health, be it your fitness, be it your career, be it your relationship, be it your skill set, anything in life, if we are able to follow it regularly, do it consistently, अगर हम regular हो पाते हैं तो ही हमें वो benefit मिलता है. Type a yes if you agree to it. Consistency is the foundation of any activity that we have to do in life. चाहे वो belly fat lose करना हो, चाहे वो diabetes reversal हो, चाहे वो thyroid issue हो, चाहे वो back strengthening हो, anything is possible, but for that we have to be consistent with the practice. Now, the second question that I want to answer is, why do we call it a challenge? ये 6 दिन का जो योगा है, हम इसको ऐसे भी बोलते सकते हैं, learn yoga in 6 days,
learn, do yoga for 6 days. Why are we calling this as a 6-day challenge? The answer is very simple for it. The challenge is not to do difficult yoga. The challenge is doing it for all the 6 days. अगर आप अभी 6 दिन पूरा कर पाते हो, ये हो सकता है स्टार्ट हो आपके जीवन में कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस का. Okay, this 6 days can become a foundation where you build on everything else. I can tell you everything about fat loss, thyroid, this, that, but it is not going to make sense, or it will not give us any benefit if we are not able to follow it consistently. Okay, तो हम यहाँ पे बेनिफिट्स को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कंसिस्टेंसी को लेके. सो चैलेंज आपके लिए अगले 6 दिन के लिए ये है कि आप क्या हर दिन हमारे साथ योगा करेंगे. टाइप promise or type yes in the chat box if you take this as a challenge, that whatever it is, even if I'm not able to do everything, I will log in and walk. अपनी जगह पे खड़े रह के walk तो कर सकते हैं. You can anytime, log in and just walk in at your place, right? So the idea is the session is going to be 45 minutes, and I want you to be consistent with the practice. I want you to join in every single day, whether you like it, whether you do not like it. Just join and do it for sure. Okay. Now, I will just play a short 50 seconds clip to tell you the benefits that people have got. So I do not want to promote yoga for benefit. I want to promote yoga for consistency of practice, but listening to other people will help you become more motivated. Okay. So here is a video that I would like you to see. These are all the students who have shared their experiences. There are many more on Google. If you go, you will find 1700 reviews. Okay, 1700 reviews मिलेंगे आपको हमारे योगा सेशन से रिलेटेड. बट एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करके. Motivate you every day. It's not only about yoga. It's a complete package. Okay. So that's like a short video where people are sharing their experiences. Now, personally, if you tell me that क्या benefit होगा योगा करने का, I would say be regular, and whatever benefit that you want, it will be yours. Okay. So now let's learn the 3 simple steps that you require to make it a habit. Okay. मेरे हिसाब से कोई भी benefit आपको चाहिए तो उसकी आदत बनाना जरूरी है. क्यों? अगर आदत नहीं बनाते तो क्या होता है? Let me ask you a question. यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वजन कम किया बहुत मेहनत करके और वो वजन दोबारा बढ़ गया? Type a yes in the chat box. If you're someone who tried doing something, you got the benefit, but because you were not able to maintain it or sustain it, what happened? It went back up again. Type a yes. So see the number of people typing a yes. Now I don't want to put you in guilt or something. मैं आपको बुरा नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं. लास्ट टाइम आपने जब भी ये मेहनत की थी एक्स्ट्रा, तब हमने क्या किया था? एक चीज पे फोकस नहीं किया था, एंड दैट वाज कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस. हम लोग कोई हार्ड चीज करते हैं जो हम लंबे समय के लिए नहीं कर पाते, एंड व्हाट हैपेंस? देन वी गो बैक टू स्क्वायर वन. देन वी अगेन डू द मेहनत, एंड देन वी अगेन लूज वेट और डू व्हाटएवर, एंड देन वी अगेन गो बैक टू स्क्वायर वन. So what I want you to learn from this 6 days is consistency of practice. Okay. Now, what are the 3 simple things that you require to make yoga as a habit? Let's learn that. Okay. The first thing is that it has to be easy to do. Now, what do I mean by this? There is something called as an all or nothing trap. ठीक है? एक terminology है all or nothing trap. इसका क्या मतलब होता है? एक दिन हम उठते हैं, इतना हाई मोटिवेशन होता है, हम उस दिन योगा करते हैं, खाना खाते हैं, टाइम पे करते हैं, सब कुछ करते हैं. 2 दिन भी कर लेते हैं, 3 दिन भी कर लेते हैं, चौथे दिन एक चीज मिस होती है और हम बोलते हैं कुछ नहीं होगा आज तो. This is called doing everything or doing nothing. How many of us have been in this trap? Type AN, all or nothing. AN, ये टाइप करो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो. All or nothing trap, AN. Perfect. So this all or nothing trap is something which our, मन को क्या है ना, ज्यादा करेंगे ज्यादा फायदा होगा, इसमें मन फंस जाता है और फिर क्या होता है? We go in like all or nothing trap. So either we do everything, we do so intense exercise and everything, and then next day it is so painful that अरे आज तो होगा ही नहीं. So the next 6 days, what we are going to do is that we are going to join the session and follow as much as we can. I understand that, I am a new trainer for you. You will need time to adjust with my instructions, but I'll keep it as simple as possible. There will be 2 variations.
I will have one more person with me who will be doing the a little challenging versions and I'll be doing the simple versions. ऐसे हम दो अलग अलग versions करेंगे ताकि आप दोनों में से एटलीस्ट एक फॉलो कर पाओ. अगर दोनों भी फॉलो नहीं कर पा रहे तो I would still request you to join and do something, because in fitness something is always better than doing nothing. Yes, so that's easy to do. So always have something easy to do. Don't imagine that you will get quick results like 6 दिन में मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, हमें भी पता है वो, right? Now this is all like marketing and motivation कि अरे 6 दिन करो वजन कम होगा and all that. Now I don't want to do that. I want you to understand that consistency is more important and not the result, because even if you get the result and you go back again to square one, it's of no use, right? I don't want this circle to repeat again. So it will be easy to do and you should follow whatever is simple for you. Absolutely simple. Second, having a support system. Now there are two kinds of support system. One that we are going to create for you. Okay, this class is going to be a support system. We will be your company in doing exercise. Okay. The second support system that I want you to create is amongst yourself, your family, your friend. Now let me give you an example. अगर आपको कोई चीज पसंद होती है तो आप क्या करते हो, उसके बारे में बात करते हो. लाइक आपको क्रिकेट पसंद है, खाने पीने का चीजें पसंद है, या कोई भी चीज पसंद है, तो यू विल टॉक अबाउट इट, isn't it? Type a yes in the chat box. Type a yes in the chat box if you agree that yes, I talk about things which I love, which is so normal, right? The funny thing is that if you talk about some things, you will automatically start following it and liking it. So for the next 6 days, what I want you to do is discuss about habits, discuss about food, discuss about health, discuss about exercise amongst your friends and family members, right? Create that atmosphere that you start giving some attention to healthy things. That will help you to become consistent and follow a habit, okay? And third and most important thing, do not label yourself. Do not label yourself मतलब क्या? आप शुरू करते हैं ना तो हम लोग अपने आप से यही बोलते हैं, like, oh, I'm a lazy person, I cannot wake up in the morning, yoga is not for me, I am not flexible, I am this, I am that. This is called giving yourself a label. Now what does this what happens with this is, the moment you give yourself a label, you restrict your ability. आप अपने आप को ही अंडरमाइन कर देते हो, आपसे फिर वो जो आप चाह रहे हो करना वो होगा ही नहीं. एंड वी गिव आवरसेल्फ रीजन कि क्योंकि मैं लेजी हूं इसलिए मुझसे होगा ही नहीं, which is not a good idea. Okay, so it's important that we do not label ourselves and we start with a clean slate. Okay, past में जो हुआ वो हो गया, पहले जो हुआ, पहले हमने बहुत मेहनत की, आदत नहीं बन पाई या जो भी कुछ हुआ, बट क्योंकि हमने शायद राइट साइंटिफिक अप्रोच यूज नहीं किया था, इसलिए हो सकता है नहीं बनी होगी. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट एंड लेट्स फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड फोकस ऑन रेगुलरिटी. आर यू इन विद दैट? चलेगा क्या? टाइप यस अगेन. हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि हिंदी में बात करें तो मैं सिर्फ हिंदी में बात नहीं कर सकता. इफ यू से दैट टॉक ओनली इन इंग्लिश, दैट्स नॉट पॉसिबल. आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस एंड आई एम ट्राइंग टू बैलेंस एज मच एज पॉसिबल. ओके, okay, perfect. Now a lot of people feel that, you know, I lack motivation. How many of you feel this? Type a yes in the chat box. Oh, I don't have motivation. Type a yes in the chat box. M, yes in the chat box. Now let me tell you this, you do not lack motivation. What we are not doing is setting up an intention. What do I mean by this? Let me explain. Motivation is that you want to do yoga, you want to be fit, you want to be healthy. That is there. What's missing? I'll tell you by a short example. What happens? You decide, I'm going to start yoga from tomorrow. ठीक है, हम यूजुअली ये सोचते हैं कल से योगा करना शुरू करूंगा, कल से योगा करना शुरू करूंगा. सुबह उठते हैं, लगता है अभी योगा करने का टाइम है, फिर सोचते हैं कि करना क्या है, फिर 10 मिनट उसमें टाइम पास हो जाता है, फिर लग जाती है भूख, फिर लगता है कि अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 1 घंटे बाद कर लेंगे, फिर 1 घंटे बाद क्या लगता है, अभी ये काम कर लेते हैं, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे. ऐसा लगता है शाम को करेंगे, फिर शाम को क्या सोचते हैं, यार कल से शुरू करते हैं. Is this something that has happened with you? Type a yes again. हाँ, this is lack of intention. What do I mean by intention? Intention means deciding what, when, how, where and everything. Okay, intention मतलब हमको सोच पहले से डिसाइड करके रखना कि क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कितने बजे करना है.
ओके इसीलिए अभी हम एक इंटेंशन सेट करेंगे अपना, ठीक है? अगर आप इंटेंशन सेट करते हो, यू आर 40% मोर लाइकली टू शो अप देन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज थिंकिंग इज अ वेरी वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क. जब अगर आपने सोच के नहीं रखा है पहले से और आप टाइम पे सोचना शुरू करोगे, तो हमारे साथ ये होता है कि हम सोचते ज्यादा है और काम कम होता है. ओके इफ यू डिसाइड समथिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, then we go or spend a lot of energy thinking about it and not doing the stuff. That's why setting intention is very important. So we are going to set this intention right now. I want you to write this complete sentence in the chat section. If you are not yet subscribed to the channel, you will have to subscribe to the channel to type the entire statement. Set the intention: I will join yoga tomorrow morning or evening live at a particular time. Just write this complete sentence. कम ऑन. नहीं सिर्फ टाइम नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखो, थोड़ा सा एफर्ट करो. आई वॉन्ट यू टू डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ टाइपिंग दिस एंटायर स्टेटमेंट. आई विल जॉइन योगा टुमारो मॉर्निंग और इवनिंग लाइव एट 7:30 AM, 6:30 AM और वॉट एवर टाइम. दिस विल मेक श्योर इट विल 40% ज्यादा चांस हो जाएगा आपका एक आदत बनने का, अगर आपने राइट इंटेंशन सेट किया तो. इंटेंशन सेट नहीं करते ना तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं. अच्छा ये टाइम पे कर लेंगे, वो टाइम पे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और उससे क्या होता है, फिर आता है अगले दिन कर लेंगे. तो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन. दैट्स सो अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग. वी आर 1250 people on the call. So people ask me that why don't you do it on Zoom? Because Zoom की कैपेसिटी नहीं है जितने लोग हमारे साथ योगा करते हैं. अभी 1250 लोग हैं और उसके बाद कल आप देखोगे तो और लोग बढ़ जाएंगे. So I can tell you this, ours is the biggest community which is focusing on consistency of yoga practice online, and that's why we call ourselves Habuild. Habuild का full form यही है, habit building. ये दो वर्ड को हमने क्लब किया है और उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है which is called as Habuild. So our sessions are called Habuild Yoga Every Day. Okay. So now once you are set with the intention, let's discuss one important point. अभी 1 जनवरी आ ही रहा है पास में. So lot of people take a resolution on New Year, but by 19th of January they are not able to follow it beyond 19th of January. 19 जनवरी तक फॉलो कर पाते हैं मैक्सिमम लोग. 92% of the people drop their resolution by 19th of January. That's why it is called as an official quit day. 19 जनवरी को ऑफिशियल क्विट डे कहा जाता है और उसके दो वजह है. 1, रेजोल्यूशन आर नॉट टाइम बाउंड. वो बोलते हैं मुझे ये साल भर रोज योगा करना है. डजंट वर्क. एंड दे डू द रेजोल्यूशन और टेक द रेजोल्यूशन अलोन. दैट आल्सो डजंट वर्क. नाउ इफ द चैलेंज इज टाइम बाउंड एंड विथ अ फ्रेंड, that will help you or increase your chance of becoming regular by 95%. There was a research which shows that 95% you are more likely to do a challenge if it is a little shorter duration and taken with a friend. So I want you to decide, like this will be like a good thing also for you. आप खुद तो कर ही रहे हो और 2-4 लोगों को अपने साथ और करवा सकते हो. So I want you to write a number in the chat box. Be realistic, okay? Don't write random numbers. How many people would you want would you be inviting or would you want to do it with you? कितने लोगों को आप इनवाइट करना चाहेंगे चैलेंज में और कितने लोग आप चाहेंगे कि वो आपके साथ ये चैलेंज करे? तो आप एक नंबर लिख सकते हैं. प्लीज डू नॉट राइट 1000 एंड ऑल. ओके, थोड़ा रियलिस्टिक लिख के अपने फैमिली मेंबर्स जिनको भी आपको लगता है कि इतने लोगों तो मुझे करवाना ही है. It is not mandatory. It is something which will help you become regular. Me and my daughter, that's great. So we'll be sharing a simple message on WhatsApp that, oh, I have joined this and challenge. And if you want to, you can just forward that message on from WhatsApp to your friends and family members. Okay. Second, let's talk about the schedule. So tomorrow morning, we'll be doing some light yoga and learning breathing techniques. Okay. That's Monday. Tuesday, we'll be focusing on lower body. Wednesday, we'll be focusing on upper body. Thursday, we'll be focusing on core and laughter. There is a laughter session also on Thursday, so wait for it. Friday, we'll be focusing on flexibility. Saturday, we'll be having a special session on Tabata and we'll also be doing a meditation. Sunday, we'll be having bonus session on diet. So a lot of people ask me कि आप diet के बारे में बताओ, diet के बारे में बताओ, diet के बारे में बताओ. All or nothing trap में हमें नहीं फंसना है, इसलिए हम अभी diet की बात नहीं करेंगे. Diet की बात हम लोग 7 दिन बाद करेंगे.
Apart from these, there are 2 bonus sessions in between, which will be a surprise for you. One will be on Wednesday, one will be on Saturday. So stay on the group so that you get that bonus sessions as well. The timings of the batches are morning 6:30 to 7:15, 7:30 to 8:15, 6 p.m. to 6:45 p.m., 7 p.m. to 7:45 p.m. Link to join all the batches is going to be the same. You can join and do online live with us. Okay, that's the schedule. Now, how to log in? I don't think I need to tell you. Guidelines, very important guideline. 1, follow as much as you can. Listen to your body. Do not force yourself. वैसे हम लोग काफी सिंपल ही करने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा बॉडी पेन होगा अगर आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया है और आप एकदम नए नए हैं एक्सरसाइज में. तो बी रेडी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी पेन. रिमेंबर दिस वन टेक्निक. Whenever you have pain, smile more. Okay? जितना आपको दर्द होगा उतना ज्यादा मुस्कुराइएगा. The more you smile or laugh, endorphins are released, which are the natural painkillers of the body. तो थोड़ा बहुत दर्द होगा, bear with it. You know, you have to become stronger. आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा. तो इससे बेटर है कि आज थोड़ा सा दर्द सहन कर लो और स्ट्रांग बन जाओ. ठीक है? This is the only guideline that I need you to follow. And of course, you have to be regular for all the 6 days. Whatever it takes. जो भी कुछ हो. अच्छा, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो. बाय चांस इफ यू डिसाइड कि मुझे 6:30 करना है, फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू डू इट, प्लीज ज्वाइन एट 7:30. वो भी नहीं हुआ, डू इट एट 6 p.m. It's okay with us. You do more than one batch, that is also okay with us. Just be regular. That's what we want and want you to follow or, you know, focus on. और अगले 6 दिन में आप मेरे मुंह से कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी कम से कम 1000 बार तो सुनेंगे ही सुनेंगे. सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल. Okay, and now let's talk about what can you do for a better sleep. But before I talk about sleep, let me tell you this one thing. A lot of us ignore sleep as a solution for our health. We feel that sleep is something जो ऐसे जबरदस्ती हमको करना पड़ता है या हम उसको उतना importance या respect या honor नहीं करते हैं. Okay, so it's important to understand that sleep solves a lot of health issues, a lot of them. Okay, starting from fat loss also. If you sleep on time and wake up on time, it will help you with a lot of fat loss. Okay, that's very important. I'm just saying because it will help you to become better and sleep on time. But if you want to sleep on time, this is something that you should follow, which is first, plan your sleep time. Again, important point. When you do not decide when you want to sleep, what happens? I will sleep at 10:30. Then you will say that, no, I'll sleep at 10:45. Then you said I'll sleep at 11 o'clock, then 11:15, then 11:30, then 12, then 1. We keep postponing if there is not decided. So the first thing again comes back to the intention point. Decide your sleep time and try to stick to it. So don't be a robot and like, nahi, sona hai matlab sona hai. Aisa nahi hai, but you know, 10-15 minutes plus minus is good. It's okay. But try and do it every single day so that it becomes, you know, your body gets tuned to it. Number 1. Second point, screen off. Now, I know that all of us know this point. ऐसा नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि स्क्रीन ऑफ करना चाहिए, बट मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बताता हूं पीछे कि क्यों स्क्रीन टाइम या स्क्रीन देखने से पहले हमारी नींद की क्वालिटी खराब होती है. सो ऑल ऑफ अस नो अबाउट ब्लू लाइट. टाइप बी इन द चैट बॉक्स इफ यू नो अबाउट ब्लू लाइट. I will take all your questions. Let me just finish my part and then I will answer all your questions. So just please wait for like 7 minutes more. How many of us know about blue light? No? Okay, don't worry. Now, you know, हम लोग धरती पे काफी सारे सालों से हैं. And every one of us, most of us, see the sky as blue color. Isn't it? आपको sky blue दिखता है ना? Most of us, right? कभी कभी orange शाम को वगैरह दिखता है, but when the sun is right up in the sky, you will see it in blue color. Now, the brain has associated blue color as daytime. And it means that right now is the time to work. This blue light, which you see in sunlight, which is refracted the most, is the same light which is emitted from your LEDs and TVs and laptop and mobile phone. So when you watch TV, mobile, laptop or light during the night or beyond sunset, what happens is that your brain is still feeling that, oh, it's daytime. When it is daytime, it is difficult for us to sleep because our body is producing cortisol, which is the awareness hormone, and suppressing the melatonin production, which is the sleep hormone.
तो जितना आप ब्लू लाइट को एक्सपोज होते हो उतना आपका शरीर मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको नींद जल्दी नहीं आती है, और अगर आती भी है तो उसमें क्वालिटी नहीं रहता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू बी इम्प्रैक्टिकल एंड टेल यू दैट 2 घंटे पहले मोबाइल फोन छोड़ो. नहीं, अगर वो आप कर पाते हो तो नथिंग लाइक इट, मतलब दैट्स लाइक एन आइडियल सिचुएशन. But I don't think that it's practical to leave your mobile phone 2 hours before. But what's practical is 30 minutes. Okay, type 30 in the chat box if you are going to at least attempt to leave your mobile phone for 30 minutes before you sleep. Type 30 in the chat box. Perfect. So the point is our brain is ना super sharp. जितने लोग intelligent होते हैं ना, मतलब if you are intelligent you will quickly get bored of anything. So अगर उन 30 मिनट में आपने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है, तो क्या होगा? You will again pick up your mobile phone or you will feel like कि अरे कुछ तो missing है, I want to do something. So decide again what will you do in those 30 minutes. What you can do, you can read a hard book. Okay, no electronic book or medium of reading. Hard book you can read. You can do some self-care like massage or write a journal or plan for the next day, anything that you would like to do, maybe like face massage or whatever. If you want to do some chumpy or whatever, I don't know, you can decide for yourself जो आपको पसंद है, जो आप 30 मिनट में कर सकते हो. And a very effective method is drinking turmeric milk or turmeric latte, right? उसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं. टर्मरिक में जो कुरकुमिन होता है उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट जरूरी है फॉर बेटर डाइजेशन, दैट्स कॉल्ड ब्लैक पेपर. हल्का सा काली मिर्च डालना हल्दी वाले दूध में बहुत जरूरी है. इफ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, डू नॉट ड्रिंक इट. इट्स अ सजेशन फॉर दोज हु कैन ड्रिंक हल्दी वाला दूध. तो हल्दी वाले दूध में आप हल्की सी काली मिर्च जरूर ऐड करिएगा व्हेन यू आर ड्रिंकिंग. इट्स अ गुड स्लीप इंड्यूसर. आपको बहुत अच्छी नींद आएगी अगर आप हल्दी वाला दूध पिएंगे. वेदर के साथ आप चेंज कर सकते हैं. आप ठंडा दूध या गर्म दूध आपको जो पीना है, वो ठंड में गर्म, गर्मी में ठंडा, ऐसे आप कर सकते हो. एंड द वेरी इफेक्टिव टेक्निक फॉर फॉलिंग asleep quickly is Bhramari Pranayam. If you know it, good. If you do not know it, we are going to learn tomorrow how to practice Bhramari. Okay, so these are the 5 things I would highly recommend you follow so for a better sleep. If your sleep is good, okay, let me tell you this one thing very important. Your next day, how is it going to go? Most of it is decided one day before while you're sleeping. आपका अगला दिन कैसे जाने वाला है ना, वो एक दिन पहले आप कब सोते हो, कैसे सोते हो, वहीं पे डिसाइड हो जाता है. Would you agree to it? Type a yes. Quickly type a yes if you agree that हाँ, अगला दिन मेरा कैसे जाने वाला है वो एक दिन पहले डिसाइड हो जाता है. Isn't it? So for the next 6 days, what are we going to do is that we are going to have a Valentine week for ourselves. Okay, you have to pamper yourself as if your own Valentine. जब आप अपने Valentine के लिए, जिनकी शादी हो गई है उनके लिए तो शायद ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जिनकी शादी नहीं हुई है, जो Valentine week सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने पसंदीदा व्यक्ति के लिए आप इतना कुछ करते हैं, लाइक उनके लिए गिफ्ट लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. अगले 6 दिन अपने आप के लिए ये सब करना है. अपने आप के लिए एक्सरसाइज करना है, अपने आप के लिए पानी पीना है, अपने आप के लिए नींद पर ध्यान देना है. कैन वी डू दैट? यस. सो दैट इज ऑल आई वांट टू से. आई वांट टू एंड माय पोर्शन ऑफ टॉक अगेन बाय सेइंग दिस. फॉर द नेक्स्ट 6 days द फोकस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस. द प्लीज फॉर 6 days डू नॉट फोकस ऑन बेनिफिट्स, कि इसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा. देखो, कुछ कर रहे हो तो बेनिफिट मिलेगा ही. Isn't it? हम लोग ये सेशन को हर एक आसन के बाद इस आसन का ये बेनिफिट है, इस आसन का ये बेनिफिट है, इससे मोटिवेट आपको नहीं करना चाहते हैं. ओके, आवर पर्पस इज टू हेल्प यू बिकम कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस. आवर पर्पस इज नॉट टू मेक यू फील ये आसन ज्यादा बार करना चाहिए क्योंकि इससे बेनिफिट होगा, बिकॉज इट डजंट वर्क दैट वे. यस, एंड आई एम श्योर यू नो इट. आपको बेनिफिट्स पढ़ना है आसन की तो आप गूगल भी कर सकते हो. मेरा एक्सपर्टीज मैं इसलिए नहीं यूज करना चाहता ताकि मैं आपको आसन के बेनिफिट्स बताऊं. I am a person who has been doing yoga for 972 days without a break. आज जो मेरा सुबह सेशन हुआ था लाइव, 972 days I have been doing it consistently. Every Sunday without a break from 22nd March
2020 till today, I have not missed a single class of teaching yoga. Okay, and I don't want to tell you this that oh I'm bragging about myself. मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहता, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि कंसिस्टेंसी रहेगी ना तो आपको सब बेनिफिट मिलेंगे. कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, सिर्फ बेनिफिट जानोगे, उससे कुछ नहीं होगा. सिर्फ बेनिफिट जान के टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है. ओके, सो लास्ट अगेन, just promise again by writing 6 in the chat box that you're going to be here for all the 6 days, whatever it takes. 6 लिखिए. आप चारों में से कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हैं, बट हर दिन प्रैक्टिस करनी ही है. अच्छा, one very important point, we will not be giving you any recording whatsoever. Why? Because recording means giving the mind an option. I have the recording, I will do it later. I am sure you have had like lot of recordings in the past 3 years because of Corona, which you thought that you will watch, but we never opened it. And we have done that experiment ourselves. We have given recording to people and only 2% of people actually open the recording. तो आप ये मुझे रिक्वेस्ट करिएगा भी मत कि रिकॉर्डिंग दो, क्योंकि मैं आपको सॉरी बोलने वाला हूं. बस सॉरी, वी विल नॉट बी गिविंग यू एनी रिकॉर्डिंग्स. ओके, thank you so much for joining in. If you have any questions, you can put it in the chat box. If you do not have any questions, we'll see you tomorrow on the mat. Can attend 2 classes? Yes. Please tell what should be the time gap for meal before and after yoga. Before yoga, at least 1.5 hours. After yoga, 15-20 minutes. I have ligament injury. Can I still participate in these sessions? Gaurav, yes. Join in, but I would still recommend going to a physiotherapist. हम लोग कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस आपको करवा सकते हैं, बट आपको स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग जो करनी है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा. Yes, we will consider knee issues while the sessions. Don't worry about it. एंजाइटी भी है मुझे, उसमें रिलीफ होगा क्या? आप ज्वाइन करके देखिए, आप करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा. How many hours of sleep is required in a day? It is a personal question, but I would still say 7 to 9 should be good. Turmeric quantity, now I am not an expert there. You can ask someone in your house who knows it better. I don't know how much quantity of turmeric is required. Should I eat my thyroid medicine before yoga? Yeah. Please continue your medicine however it is. Is it compulsory to have a yoga mat? No. Or chatai, dari, anything that doesn't slip. You can do it on the bed also. हमारा योगा सेशन ऐसा है कि आप बिस्तर पे भी बैठे बैठे कर सकते हो. हिंदी भी बोला करो, इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं. आपको कल आप जब योगा ज्वाइन करेंगे ना, तो आप म्यूट पे भी करेंगे तो भी आप हमारा सेशन कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर रिक्वायर्ड. बट वी विल बी हैविंग लाइक सबटाइटल्स एंड ऑल दैट, सो दैट यू डोंट हैव टू लाइक थिंक सो मच अबाउट इट कि अरे क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा. ऐसा मोस्टली तो नहीं होना चाहिए. उतना ध्यान रखने की कोशिश मैंने किया. Is it paid after 6 days? Yes. We will talk about it on Saturday. If you want to continue with us and if you like our concept is all about habit building. Connect again soon. Should I eat? I've already answered the question. Any dress code, comfortable clothing. Tomorrow is Zoom meeting? No, it will be YouTube live. It will help you reduce depression. Again, join in and see yourself. 6 दिन की तो बात है, इतना तो कर ही सकते हैं. Can you sip water during session? Your choice. I am underweight. Can I also do? I was 60 kilos when I started practicing yoga. Today I'm 78. And it doesn't look like that I've become fat. I've just grown muscles. See you tomorrow, Mohammed. Is it benefit for weight gain? Yes, I've already answered the question. I am 8 years old. Can I attend? Please join it with your mother. Inspire your mother also to do it with you. मुझे arthritis है, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो. Is there any class at 5 p.m? There are only 4 time slots. We have already mentioned those. Can we eat dry fruits before yoga? Yes, you can do that. Cervical and back pain yoga, you can still join in. Can we drink water between session? Yes. Weight बढ़ाने का है sir, please join करिए, अच्छा रहेगा. Is it possible to lose weight? I am going to ask you this question. Would you agree to it that consistency of practice will eventually lead you to a optimal weight? I'm not going to say lose weight or gain weight. Optimal weight would be the right word. चिकनगुनिया में रिलीफ मिलेगा क्या? करके देखो. एक्सरसाइज तो करना ही है हर दिन, कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है. तो why not join in and see it for yourself?
सर मेरे लेग्स नहीं मुड़ते हैं, योगा होगा क्या? हाँ हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं. I am late today. Give me summary of today's session. I am really sorry, but that would not be possible for now. Do you have any suggestions or diet along with yoga? I've already mentioned we will talk about diet next Sunday. पहले 6 दिन सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, डाइट का एलिमेंट 7 दिन बाद ऐड करेंगे. अदरवाइज वी विल फॉल इन दैट ऑल एंड नथिंग ट्रैप. डूइंग एवरीथिंग एट वंस मीन्स डूइंग नथिंग एट अ टाइम. ओके. Start 6 days for Surya Namaskar. Surya Namaskar is a lot of people cannot do Surya Namaskar for the obvious reason is that knee issues cannot do Surya Namaskar, back pain cannot do, neck pain cannot do, and a lot of people are facing these issues. So हम Surya Namaskar सीखते हैं, but that's a chair version also. There's a variation that we'll learn on Friday. BP कम होगा क्या? BP कम होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, but फायदा होगा. आप मुझसे डॉक्टर जैसा एक्सपेक्टेशन ना करें. मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूं. अगर आप मुझे बोलेंगे बीपी कम होगा क्या, तो मैं आपको यही बोलूंगा डॉक्टर के पास जाइए. कैन वी हैव बाथ बिफोर और आफ्टर क्लास? एनीथिंग इज फाइन. इज इट गुड फॉर ओवेरियन सिस्ट? टू सम एक्सटेंट यस. टेल मी दिस. मुझे आपको बेनिफिट्स बताने की जरूरत है क्या कि योगा के कितने सारे बेनिफिट्स. आई थिंक दैट एवरीवन इज अवेयर दैट योगा हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. इफ नॉट दैट, physical activity has a lot of benefits, right? And it works in every case. Whatever you are going through, it will have some benefit. Now, will it get cured or not? It is something that I cannot, promise. Like मैं ऐसे कुछ भी झूठा promise तो नहीं करने वाला हूँ. हाँ ठीक हो जाएगा, करो. Not my style. Will you become consistent? Yes. If you follow the simple steps that we are telling you, you will definitely become consistent. Will you get a lot of benefits out of this? Yeah. What benefit will you get? We don't know. You are a unique individual. We don't know your medical history. So commenting on any medical condition is not something I would prefer. आपके रिकॉर्डिंग बेस्ट टाइम कौन सा होता है? आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम कौन सा होता है? सुबह मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा होता है. बट अगर आप सुबह पॉसिबल नहीं है, आप बिजी है, तो शाम को एटलीस्ट दिन में एक बार करना अच्छा होता है. कभी भी करो. 6 दिन ओवर. हाउ कैन वी कंटिन्यू? प्लीज लेट मी नो. आप पहले 6 दिन करिए. First, you do 6 days with us. You understand what is the point of view that we have towards exercise. If you like that, we will be more than happy if you join us. So it is very important to have a clear expectation. Usually, if you see a trial class, it would be like 1 day or 2 day. No, we want to explain you the full week, how it goes in our regular sessions. And then you decide that, it is something that I really want in my life. अगर आपको लगता है कि आपको नहीं वेट लॉस ही चाहिए, आप तो बस वेट लॉस ही बताओ हमको. माई लॉस इज नॉट समथिंग वेयर वी लाइक, नहीं वेट लॉस. वी आर नॉट समवन हु डज दिस. वी आर समवन हु विल हेल्प यू बिकम कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस. ओके, आई होप आई एम क्लियर विद द पॉइंट. वेट लॉस होगा क्या? कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होगा. ये क्लास एक फाउंडेशन बनाने के लिए आपके. आप मुझे बताओ ना, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं करोगे, आपको लगता है क्या वेट लॉस होगा? बताओ. और अगर लगता है तो प्लीज डू व्हाटएवर यू फील. देन आई वुड नॉट से एनीथिंग. इफ यू फील दैट कि नहीं बिना कंसिस्टेंसी के भी वेट लॉस हो सकता है, तो इट्स वेरी गुड इफ इट्स दैट पॉसिबल. बट आई वुड डिसएग्री दैट विदाउट कंसिस्टेंसी इट्स वेरी टफ. Please mention the time again. Okay, I will do that. Where is the time? Yeah, there are time. This is the time slot. Will it help with irregular period? Yes. Exercise does help you to have better periods. Water intake, again, we will talk about it in the diet session. Class Zoom पर होगा क्या? नहीं, class YouTube पर होगा. Forward exercise bending is not possible for cervical neck problem. Yes, that's correct. Will you have back pain and cervical specific yoga asanas exercise? Yes, we will. Very motivated. I want you to focus on consistency. I am going to मैं consistency word की एकदम ना ऐसा माला जपने वाला हूं आपके लिए. Every line will have one consistency word. What about anxiety? Again, without consistency of yoga practice, I don't think that's possible. My weight is 73. Water intake कितना लूं? आप 3 लीटर पीजिए. ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें. It works in periods I have too much pain. Yes, it will. So do as much as you can. हाँ, now a lot of people have this question कि periods में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं.
पेट पे लेटे हुए आसन को आप अवॉइड करना है तो आप अवॉइड करो, ज्वाइन करके जितना होता है उतना करो। आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, कोई बात नहीं। हमें कंसिस्टेंट होना है, हमें परफेक्ट नहीं होना है। परफेक्शन के पीछे जाओगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं होगा। You have real positive vibes. I would prefer calling it practical vibes. I want to be a person who gives you practical tips, not good tips. You know, if you tell me what to do for weight loss, I will tell you go in a calorie deficit diet. But I know it's not practical for a lot of people. अगर आप मुझे पूछोगे बेस्ट तरीका क्या है वेट लॉस करने का, मैं बोलूंगा कैलोरी डेफिसिट में जाओ। बट मेजर करना, इंडिया में अगर आप बोलोगे ना घर में अपने, जैसे मैं अपने घर में कोशिश कर रहा था ये एक बार, कि आप खाना मेजर करके खाओ, 50 ग्राम चावल, 40 ग्राम रोटी और ये सब। अगर आप मेरे जैसे कोई यंगस्टर हो तो आपको तो मम्मी बाहर निकाल देगी घर से। तो कैलोरी डेफिसिट माइट बी द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बट मे नॉट बी प्रैक्टिकल। On the contrary, I can give you some very simple tips that are very practical and will give you results. Now, once you become expert in those basic principles, then you go to next level. You don't directly go to PhD, correct? You have to graduate from school, then college, and then go for PhD. नींद के लिए भी सिखाना सर, नींद के लिए, हाँ मैं भ्रामरी कल सिखाने ही वाला हूं आपको। Is empty stomach preferable before yoga session? If it's in the morning, it's good to have empty stomach, but again, doing is more important than any other thing. मेरा क्वेश्चन का आंसर प्लीज, had bypass, can I do it? If it was recent, go to a physical yoga class, but if it was like 1 year 2 year back, you can do it. I am using honey with milk, is it good or not? आपको अच्छा लग रहा है तो आप पियो। Age barrier, no age barrier. I have my youngest student as 3 years old. The eldest participant of our batch is 85 years old. I'm suffering from heavy back pain. Shall I join this class? If it's a heavy back pain, as you are mentioning, I would prefer going to a physiotherapist. आप physiotherapist के पास जाओ, थोड़ा बहुत उनसे सीख लो, उसके बाद ऑनलाइन ज्वाइन करो। केवल टमी वाले योगा करने से वो रिड्यूस होगा? नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट की एक्सरसाइज करने से पेट कम होता है, नहीं। अब आपको मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूं। जब आप खाना खाते हो, आप डिसाइड करते हो क्या कि किस तरफ फैट जाना चाहिए? मैंने अगर जंक फूड खाया तो मेरा पेट का फैट बढ़ेगा या थाई का फैट बढ़ेगा या हाथों का फैट बढ़ेगा? कैन वी टेक दैट डिसीजन? इफ द आंसर इज नो, द आंसर इज ऑल्सो नो फॉर यू कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम वेयर द वेट विल लूज फर्स्ट। वैसे भी आप फैट पे कभी डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हो, आप काम करते हो मसल पे। जब आप ऐसे कर रहे हो तो आप मसल का इस्तेमाल कर रहे हो। यहां पे अगर फैट है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आप कितना मसल यूज कर रहे हो। यहां पे हो सकता है आप ऐसे कर रहे हो और आपके पेट के फैट से एनर्जी जा रही है, ये भी हो सकता है। सो आप अपने मन से ये निकाल दो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लैट टमी एक्सरसाइज और reduce your arm exercise. No, toning is possible. Toning is of the muscle, not the fat. Losing belly fat does not have any direct exercise. It is always fat loss which goes from anywhere of the body, and it's always a good idea to lose fat from everywhere. Why to keep fat? नहीं, पेट का फैट जाना चाहिए बट हाथ में फैट रहने दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। Sir, I'm suffering from ovary cyst with irregular periods. Can I get my periods back on track with your yoga class? I have a lot of people who tell me that कि हमारे periods regular हो गए हैं, but if you tell me that sir आप promise करो, but आप मुझे बताओ कि आप regular रहोगे तो आपको लगता है कि ये possible है? I'm sure the answer would be yes. Please answer my question. What's your question? I am planning for a baby. Kirtana, the sessions will help you with that, reduce weight and all that, and have your what do you call it, conceiving power better. But once you become pregnant, these sessions are not for you. If anyone who is pregnant right now, these sessions are not for you. Okay, weight gain हो सकता है yoga or gym, whichever you will follow consistently. Sir, I'm working women who continuously sits for 8 hours, so I started walking. I got knee pain, so stopped. I get some pain if I do yoga. You can still join in. You will have a lot of benefit.
Will you advise which exercise to do for arthritis, or do we have to ask you during the class? No. I will give you already all the questions. Beach mein puchna will not be a good idea. There are 1,000 people, and if they start asking questions, our 45 minutes will go in only answering questions. Then it's a follow along class. Follow along मतलब क्या? मैं करता रहूंगा और मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा और आपको साथ साथ करना है. अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जाऊंगा बार बार तो क्या होगा? कोई एक्सरसाइज नहीं होगी फिर. ओके. Fat loss workout will help you reduce fat. There is nothing called as fat loss workout. Any workout that you do will help you reduce weight. Sleep apnea clear in yoga. For sleep apnea, follow this simple tool called as mouth taping. जिनको भी खराटे की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग इशू और स्लीप एपनिया, गूगल दिस टर्म माउथ टेपिंग. माउथ टेपिंग मतलब क्या? MOUTH, माउथ टेपिंग, टेप लगाना उस पे. So if you tape your mouth before sleeping, it will help you with your snoring issues and sleep apnea also. I have umbilical hernia. Please go to a offline class. Do not join our sessions. Cholesterol, please help. Focus on your food. Cholesterol is something that can be controlled by not eating random stuff. So if you're eating something random, have a control over that. Migraine control, again, see, randomly telling कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, I don't know. Now, if you want, you can read 1,700 people talking about different benefits. Someone will say कि migraine ठीक हुआ, someone will say thyroid ठीक हुआ, someone will say this, someone will say that. If you ask me why am I doing this, I will tell you only one point, and I'm sure I don't want to repeat it again. It's consistency of practice. If you are consistent with the practice, anything is possible, or at least you have a shot for it. If you are not consistent, asking a question is of no use, isn't it? मेरा लेग बहुत दर्द होता है सर, थोड़ा और दर्द होगा फिर अगले 2-3 दिन, कोई बात नहीं, go through it. दर्द के आगे जीत है. Do we do yoga to build muscle? Yes, I do yoga to build muscle. How to continue yoga regularly? First, do 6 days regularly. Would you suggest yoga for scoliosis? Okay. For someone who has spine issues, I would again tell you to go to a physiotherapist. डिलीवरी के बाद कब योगा स्टार्ट कर सकते हैं? वैसे 3 महीने, बट एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए. What are the things needed in the class? You are needed in the class. Rest, everything is fine. है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लॉग इन करो बस. Is there particular yoga for every day? Yes. It is particular yoga for every day. We have a different structure for the entire week, and you will get to see it. I want to lose weight. Will I be able to? Aman, tell me this. If you're regular with exercise, what do you think? Will you be able to lose weight? Your words are really inspiring. Again, I would want to say this. Whatever I talk, I want to be practical. Okay, I don't want to be good or best. I want to be practical. That's my aim. आपकी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्टार्ट यहीं से होता है. फॉलो समथिंग एवरी सिंगल डे, and then you can talk about other stuff. But if you are not able to follow it regularly, that's the first thing that we should work on. Then only we can talk about other stuff. So I will take 2-3 questions more and then we'll see you tomorrow. चेयर सूर्य नमस्कार प्लीज करवाइएगा. फ्राइडे को हम चेयर सूर्य नमस्कार करेंगे. चिकनगुनिया है तो कर सकते हैं. थोड़ा एक्सरसाइज करने का फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा. मेरी डॉटर जिम जाती है, क्या साथ साथ योगा भी कर सकती है? उसे वेट लॉस करना है. आप उसके एक तो पीछे मत पड़िए कि तुझे वेट लॉस करना ही है एंड ऑल दैट. वो जिम जाती है, अगर वो रेगुलरली जिम जा रही है तो उसको एक ही चीज करने दो. 10 चीजें करेंगे तो एक भी नहीं होगा बाद में. अगर वो योगा करना चाहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकती है. योगा के साथ जिम किया जा सकता है, जिम के साथ योगा किया जा सकता है. बट क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा और कभी कभी दोनों चीजें करने के चक्कर में दोनों चीजें छूट जाएगी. तो इससे बेटर है कि उसको बोले एक फॉलो करे जो वो कंसिस्टेंटली कर पाए. I have uterus prolapse. Can I still do yoga? Talk to your doctor, please. Can we treat disc bulges compression with yoga? Yes, but you need a little bit more supervision. Take a 1-to-1 session with a yoga instructor. A group class might not work for you. Can I do yoga with vertigo? Yes.
You can do yoga with vertigo, but make sure that you always have something to grab onto अगर आपको थोड़ा चक्कर जैसा फीलिंग आए. साइनस प्रॉब्लम में एडवाइस क्या है सर? रेगुलर एक्सरसाइज. साइनस प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, okay, any itis, arthritis, sinusitis, whatever. Any itis means what? Inflammation in the body. इन्फ्लेमेशन का मेजर कॉज क्या होता है? स्ट्रेस. रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम तो होगा ही होगा. What's happening? Turmeric pepper without milk. You can take it with honey. शहद, हल्दी और काली मिर्च हल्की सी, उसको आप ऐसे करके चम्मच से खा सकते हैं. बट अगेन मिल्क हैज वन कंपाउंड कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन हिंदी का वर्ड होता है ना तृप्ति, उससे आता है ये कंपाउंड, जो क्या करता है ना, हमें तृप्त कर देता है. तृप्त करता है तो मन शांत हो जाता है, तो नींद अच्छी आती है. तो हल्दी और काली मिर्च और शहद आपके लिए इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है, बट उससे नींद आएगी क्या, इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं. Yes, that's what I want, Renuji. We want that people should become regular first and then think about benefits. People are so much engrossed about benefit बताओ, benefit बताओ, benefit बताओ. अरे पहले रेगुलरली करो, फिर बेनिफिट का कोई फायदा है. बेनिफिट से जो मोटिवेशन आता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, क्योंकि आपको बेनिफिट एक दिन में तो नहीं मिलेगा, 7 दिन में भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 1 महीने बाद. और फिर आप क्या बोलोगे, अरे 15 दिन किया कुछ नहीं हुआ. बेनिफिट नहीं आता इतने जल्दी. इसलिए बेनिफिट के पीछे नहीं पड़ना है, हमें पढ़ना है कंसिस्टेंसी के पीछे. खाने के कितनी देर बाद योगा करना चाहिए? 1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं. मिल्क और कोई भी A2 मिल्क, हाँ नहीं, मैं तो प्रेफर करूंगा A2 मिल्क. आपको तो पता ही है, तो फिर आप तो खुद ही देख सकते हैं. A2 मिल्क इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. इट वर्क्स इन अस्थमा. I would still prefer talking to your doctor, because physical exercise sometimes can trigger asthma. So please take care. And that's it for today. Thank you so much for joining in. We still have 500 people on the call. Thank you so much for your time as well. And I hope that we focus on consistency for the next 6 days. And I will talk about benefits and all in the upcoming sessions. So don't feel like, यार ये benefit क्यों नहीं बता रहे हैं? There is a reason that why are we doing it. And we want you to experience benefits rather than we telling कि अरे ये benefit हुआ, वो benefit हुआ. ऐसे खाली मन से शुरू करो, benefit आपको दिखने लग जाएगा. ठीक है? Okay, see you tomorrow.